तो मेरे पिताजी उनको जब से जानते थे, हाँ जी। जब मतलब बर्मन दादा की शादी भी नहीं हुई थी, अच्छा। और वो गाना गाते थे प्रोग्रामों में, फेस्टिवल्स में, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उनको भी बुलाया जाता था, तो वो हारमोनियम लेके गाते थे और मेरे पिताजी तबले पे। बस यही, कोई ऑर्केस्ट्रा साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल गाना था उनका। और वो फोक में स्पेशलाइज करते थे, भटियाली म्यूज़िक। तो भटियाली गाने वगैरह जब गाते थे, मेरे पिताजी तबले पे बजाते थे। तो मेरे पिताजी कहते थे उस ज़माने में बर्मन दादा को 25 रुपये फीस मिलता था, विच वॉज quite a handsome amount. Princely sum. हाँ, and my father used to get 5 rupees, which was also quite a good amount for a tabla player, you know, in those days. तो ये सब पिताजी से मैं सुनता था, और उनके वॉइस के बारे में, उनका गाना वो पहले, इनफैक्ट composing came later after this stage in Barman Dada's life. And initially, like most of the music composers, initially they struggle to compose because it doesn't come as a natural gift. But sometimes in the process of growing as a composer, in the case of Barman Dada, मेरे पिताजी कहते थे एक टर्न आया उनकी ज़िंदगी में कि he became a master composer. I mean, one of the historical people in the music industry. क्या कंपोज किया उन्होंने, मतलब इट हैज़ बिकम लेजेंड। तो पिताजी कहते थे कि जब वो टर्न आ गया तो तूफान आ गया, इनके कंपोजिशंस में ऐसा लोकप्रिय बन गए उनके सारे के सारे गाने। What about his voice? Dada's voice. If you ask me, I'll say it is one of the richest voices I have ever heard in my life. A voice that straight away penetrates you inside, you know. And my father used to say also that it was a golden voice. Sachin Das' voice was golden, molten gold. Molten gold. Molten gold. He would say, at times my father would just phone Sachin Da and sometimes go into long chats. But his phoning was only to hear that first hello, which came right from within. And my father used to, after a phone talk, he would just keep the phone and think for some time and then tell us that what a hello. बस ये hello सुनने के लिए मैं कभी कभी उनको फ़ोन करता हूँ कि वो ऐसे गोल्डन वॉइस है, ऐसे आता है जैसे धरती के अंदर से आवाज़ आ रहा है। I see. When you call up, then first Dada used to say hello, and that hello was so. And sometimes Dada used to call my father and would say hello Nikhil. That hello Nikhil, that was a voice which was so unique. My father used to say, पहचान तो आइडेंटिफाई तो इमीडिएटली हो जाता था, बट उस क्वालिटी का वॉइस उन्होंने कहा कि शायद ही कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो वॉइस सुना। Ustad Rais Khan, the great sitar player who now lives in Pakistan. Pakistan, yeah. He also worked very closely with Barman Dada, with Madan Mohan ji and many other people. One of the finest sitar players of our times, but definitely the best sitar player in the Bombay film industry. And Rais Khan Sahab had just told me, one particular incident comes to my mind now, that Barman Dada had purchased a new car. In those days it was called the Landmaster, which was very similar to the Ambassador later. So once in a recording he had called Allah Rakha ji, the great tabla nawaz, and the father of Ustad Zakir Hussain. And Allah Rakha ji को उससे कोई piece उन्होंने बजवाने के लिए recording में बुलाया था. After the recording he was driving back, so he thought Allah Rakha ji used to stay in Mahim, तो उन्होंने कहा चलो I'll drop you. But as they started from the studios somewhere in townside, when they were driving, Allah Rakha ji had this habit of constantly being in his creative mood. He used to make a lot of mathematical configurations in tabla. He was known for that, and that was one of his hallmarks, you know, a great contribution to tabla.
Alarka ji used to consciously or unconsciously always be in that state of mind. So he would recite murmur, some tabla bowls, and maybe count on his fingers, or maybe tap with the other hand, or tap with his feet, keeping the time, the meter. ले रखते थे. तो एक बार लैंड मास्टर चला रहे हैं बर्मन दादा, और बाजू की सीट में अल्लाह जी बैठे थे. तो वो अपने खोए हुए थे अपने तबले की कंपोजिशंस में, और वो टैप करते करते कुछ एक्साइटमेंट में वो पैर उन्होंने, फ्रॉम टैपिंग इट वेंट टू थम्पिंग द फ्लोर ऑफ द कार. And as many people know that Barman Dada was very particular about all his belongings, all his things. He was very particular. तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया. बीच रास्ते में उन्होंने कहा, अरे मुझे याद आ गया, मुझे वहाँ जाना है, किसी और जगह, कहीं और जाना है, कहीं और जाना है. तो उन्होंने अल्लाह रखा जी को कहा कि मैं यहाँ आपको ड्रॉप कर देता हूँ, टैक्सी पकड़वा देता हूँ, आप तो यहाँ से निकल जाएंगे. बोले हाँ ठीक है, मैं निकल जाऊँगा. तो अल्लाह रखा जी को बीच रास्ते पे उन्होंने टैक्सी पकड़वा दिया और वो निकल गए. उनको फिक्र लग गई थी अपनी गाड़ी के लिए. पंडित जी, अलाउद्दीन खान साहब के बारे में आपको ने कुछ बताया था पहले, तो क्या बात थी उनकी? ही वुड नॉट सिट विद सेम लेवल विद दादा बर्मन, क्या है? नहीं, वो ऐसा था कि उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, who is known as one of the greatest teachers and gurus of modern times, of the 19th and 20th century, one of the greatest gurus, outstanding, who produced many great disciples, his own son Ustad Ali Akbar Khan, who was the greatest sarod there, his son-in-law Pandit Ravi Shankar, and then my uncle Pannalal Ghosh, who was among his senior most disciples, even senior to Ali Akbar Khan. His daughter also was in his daughter Annapurna Devi, who is still living in Bombay. Nikhil Banerjee, the great sitar player, historical. Then Sharan Rani, many people, his grandson Ashish Khan, so many disciples he had, and each one became a very important musician. So Alauddin Khan Sahab was a very highly respected person, and he lived a very long life. Some people say 100, some people say 110. But Alauddin Khan Sahab also hailed from the same town as Barman Dada. And what my father used to say is that once Alauddin Khan Sahab was meeting Barman Dada, and Barman Dada used to call him Baba, which means father. Baba. Yeah. So he went to meet there in Tripura, where Barman Dada's main royal original mansion houses. Alauddin Khan Sahab बर्मन दादा को जब मिले तो नीचे बैठ गए ज़मीन पे. तो बर्मन दादा को बड़ा ऑकवर्ड लगा. बोले इतने बड़े महान म्यूजिशियन. बोले नहीं बाबा आप ऊपर बैठिए. बोले तो उनके ईस्ट बंगाली लैंग्वेज में उन्होंने कहा, ना बाबा, ही सेड, ना बाबा तुम्ही राजा आम्ही प्रोजा. दिस इज ए विलेज लैंग्वेज, राजा प्रोजा, which means तुम्ही राजा, मैं प्रजा. He said, you are the king, I am a subject. He said, how can I sit on the same level as you? He said. So he sat on the floor. Sat on the floor. Of course, Barman Dada immediately got down and came on the floor to be at his level. But this was Alauddin Khan Sahab. He used to, although Barman Dada was like a son to him in age, but he kept that respect कि तुम राजा हो, हम तो प्रजा हैं. He said. तो हम एक लेवल पे नहीं बैठ सकते, इसलिए हम नीचे बैठे. तो ये एक इंसिडेंट. कल्चर एक. हाँ. दादा को भी कल्चर पे ही. हाँ, तो इमीडिएटली दादा उतर गए, वो भी नीचे बैठ गए. हमने कहा नहीं ना. Lovely. Can you describe how it looked? Near car telephone exchange on Linking Road, known as the Jet. I remember there was a big strip of maroon colored bricks all round, earth color, the brick color. That I remember his house as a 2-storied building, ground and one, and I think he used to live on the first floor or whatever. But that house was a kind of a landmark in the Khar area, and everybody knew this was S.D. Burman's residence. पंडित जी, R.D. बर्मन के बारे में कुछ आपको याद है? मैं खुद उनको कभी मिला नहीं. हाँ जी. लेकिन
मेरे पिताजी से एक ही मैं सुना, पिताजी हमेशा कहते थे कि टुबलू को मैं बिल्कुल उसके जन्म से जानता था, तो टुबलू कहते थे वो, शायद इट वाज हिज निकनेम और पेट नेम एट होम. People know him as Panchamda. So my father used to say that sometimes between him and Sachin Da, जब वो लोग गाते थे या रिहर्स करते थे या कभी मिलते थे, तो तबला हारमोनियम तो रहता ही था. तो R.D. बर्मन जी, he was a toddler at that time. तो वो टॉडल करते 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 हाथ पैर पे चलते चलते वो पिताजी के गोद में आके बैठ जाते थे और तबला बजाना. बहुत तबले की तरफ हर बच्चे को तबले के लिए एक आकर्षण होता ही है, पर R.D. जी को बहुत ही था तबले के लिए. और बाद में तो हमने सुना वो पंडित शामका प्रसाद जी से भी उन्होंने सीखा. तो मेरे पिताजी कहते कि आके मेरे गोद में बैठ जाता था और वो तबले पे बजाना शुरू कर देता था. एंड माय फादर यूज्ड टू लव हिम वेरी मच एज अ लिटिल टॉडलर. एंड देन तो R.D. क्या कहने उनके बारे में. आई मीन अनदर ग्रेट लेजेंड इन म्यूजिक इंडस्ट्री. आई वुड से ही इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिज फादर्स जीनियस.